दी हिंदू फॉर एस्पिरेंट्स। ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। दिस आर्टिकल रेज सीरियस कंसर्न फॉर साउथ एशिया ट्रेड। एक स्टडी कंडक्ट होती है बाय यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक और हाईलाइट करती है इंट्रा रीजनल ट्रेड इन साफ्टा is less than one third of its potential. By the way, SAFTA is 2004 agreement that create a free trade area among SAARC countries. Study further says bilateral trade between India and the Pakistan fell in 2018 $2.4 billion to $1.2 billion to 2024, and still we have many unexploited trade proportion. Example Bangladesh 93%. फर्दर ये आर्टिकल हमें दो कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोवाइड करता है. फर्स्ट, इंट्रा रीजनल ट्रेड कंपैरिजन where SAFTA accounts for 5 to 7% while EU 45% and NAFTA 25%. Second comparative analysis is of GDP comparison of South Asia. Example, South Asia accounts for 25% population having just $5 trillion economy, while EU 5.8% population accounts for $18 trillion economy. Do read this question, 2016 GS paper 2 PYQ. Next article, Iran attack US airbase in Qatar, Al Udeid. फॉर प्रीलिम्स आपको इन लोकेशन की लिस्ट बनानी है. यूपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है. एंड डू रिमेंबर दिस ऑपरेशन लाइक मिडनाइट हैमर विच अटैक Iran nuclear sites launched by US against Iran, and other operations like Rising Lion, Operation Honest Promise 3 and Operation Sindhu of India. Now last article on seed. जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, we focus more on irrigation, fertilizer and less focus on seeds. Actually 70% of small farmers depend on market driven hybrid seed. So Beej Utsav can provide seed sovereignty to the small farmers. This Beej Utsav, celebrated at tribal belt of Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat, highlights the role of indigenous seed where farmers pledge to form community-led seed system. This one-pager notes with micro themes available on my Telegram channel.